वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए जब अप्लाई करो तो क्या क्राइटेरियाज है, दोनों के बारे में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. फर्स्ट, अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइन में अप्लाई कर रहे हैं, यू शुड बी एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर, यानी कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए. आप if you are somebody who's born in Dubai or like in Sri Lanka and who's moved over here and who's living here, no, you cannot. You have to be a citizen of India to apply for an Indian airline. इसी बात अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए अप्लाई करते हो, then there's no such requirement. You just only need to have a passport. The minimum height requirement in domestic airline for females is 155 for some airlines or 157. Okay, you need to go ahead and check. For males, it is 177. No, it's 170. So you need to be in the limit, or like you need to be above the limit that they have mentioned. So if we talk about international airlines, then all you need to, they never check your height. वो एक मार्किंग देते हैं जो 212 सेंटीमीटर्स के होती है, एंड ऑल यू नीड टू डू इज ट्राई एंड टच द लाइन बिकॉज दैट नोटिफाइज देम दैट आपकी हाइट इनफ है टू क्लोज एंड ओपन द ओवरहेड बिन. अगर आप कुछ भी करके, मतलब अगर आप टो में स्टैंड करके भी अगर आप वो लाइन टच कर सकते हैं, एंड मेक श्योर इट नीड्स टू बी विदाउट शूज. मैं एक इंटरव्यू के लिए गई थी और वहाँ पे उन्होंने बोला था कि शूज़ निकाल के करना है, एंड आई फॉरगॉट टू रिमूव द शूज़ एंड आई नेवर गॉट सेलेक्टेड. So these are the small things that you really need to look for when you apply to become a cabin crew. No visible tattoos or any mark. आप जब डोमेस्टिक एयरलाइन में काम कर रहे हैं, विजिबल यानी कि यहाँ से नीचे, सेम चीज़ यहाँ से नीचे, यहाँ से दिस इज माई विजिबल एरिया. So यहाँ से any uniform would not be lower than this. So here to here there should be no on my feet also. जहाँ पे स्कर्ट होते हैं उसके नीचे जो भी विजिबल एरिया है, जो आपके कपड़ों के बाहर दिखता है, वो टैटूज नहीं हो सकते. प्लीज डू नॉट आस्क मी, मैं कवर अप करवा लूँगी बाद में, ये नहीं. आप फर्स्ट डे ही रिजेक्ट कर दोगे. जितना पेन आपको टैटू बनाने में हुआ था, उससे बहुत ज़्यादा पेन आपको निकलवाने के लिए होगा, और वो उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगा. डू नॉट गेट इन टू ऑल दिस ट्रबल. आपको पहले ही सोचना चाहिए था कि मैं टैटू बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी ओपन थिंग कि कोई भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में यू आर नॉट अलाउड to have a tattoo on your visible area. यहाँ ही हम इंटरनेशनल जगह की बात करें तो सेम चीज़, it cannot be on your visible area. But in few airlines, having a tattoo on your entire body is a taboo. It's not allowed. They would scan your body and you would not go through it. So in my life, I never had tattoos on my body, even though once I thought I should, but then I did not. And last year I got myself a tattoo because I knew it was my time already. Now that I might not ever apply for an international airline, so I got it done. And also it's not in a visible area, so I stopped myself from a long time to get myself tattooed, because मुझे पता था कि कहीं ना कहीं अगर मेरा कभी भी मन हो गया to go for an international airline, it could be a trouble to me. The BMI, weight BMI क्या होता है? Body Mass Index. इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. Just go on Google and do this. The BMI range for females is 18 to 22. For males is 18 to 25. उससे ज़्यादा कम नहीं हो सकते हो. अगर 1-2 पॉइंट ज़्यादा है, इट्स ओके, यू कैन स्टिल गो अहेड एंड गो फॉर द इंटरव्यू, बट फॉर अ लॉन्गर रन इट्स ऑलवेज बेटर फॉर योर ओन हेल्थ टू स्टे इन द BMI रेंज. नाउ देयर इज अ एज लिमिट. When you are a fresher and when you're applying to become a cabin crew in a domestic airline, your age should be 18 plus.
अगर आप यही चीज़ इंटरनेशनल एयरलाइंस में कर रहे हैं, then you should be minimum 21 years of age. Now, if you have no experience at all, the maximum a fresher can apply is until 27 years. जब तक आप 27 के नहीं हो जाते हो, आप अप्लाई कर सकते हो. But once you are 27 plus, I'm sorry, your time to join aviation has been expired. It's really mean, but yes, you know, this job is mainly for young people. The more and more you fly, you would lose all the energy and the enthusiasm that you might have in you to continue this job for long. Now, if you are experienced crew, तब आपकी minimum requirement नहीं होती है, but still there is a maximum requirement in few of the international and even the domestic airlines. So yeah, it's sad, but it's true, because I somehow feel, you know, those days are gone wherein we would have senior crew on board. The amount of stress that these days the aviation industry has on its employees is next level, and the flying and the hours of flights and everything is just growing and growing and growing, and it has been really difficult. I think I should talk about the difficulties of being in this industry, and it should be another topic of for the video. Now, eligibility. स्विमिंग, क्या स्विमिंग आनी चाहिए? बहुत अच्छी बात है अगर आपको स्विमिंग आती है. बहुत सारी डोमेस्टिक एयरलाइन में कहीं मेंशन नहीं किया है कि स्विमिंग इज मस्ट, but in few of the international airlines it is a requirement. So swimming is such a fun thing to do, you know, everybody should know how to swim, and you never know, हम ये job इतना dangerous है, you never know हम कल पानी में land कर गए, फिर how are you going to save yourself? Forget about saving others. When we are on board, there's a huge responsibility on us for those passengers who are traveling on the flight with us. You really need to be mentally strong, physically fit, and you should have that courage कि कुछ भी हो जाए ये मैं तो कर ही लूँगी, कर ही लूँगा या कर ही लूँगी. I hope that you guys have gotten enough information about the eligibility criteria of both international and domestic airlines. All the best, guys. May God bless you, and may you achieve everything that you desire in your life. God bless you.